हाय गाइस, फाइनली द एडमिट कार्ड इज आउट नाउ. कल से बच्चा लोग पूछ रहा था सर कब आएगा कब आएगा. नाउ फाइनली द वेट इज ओवर and it's a great thing that the admit card is out now. What you have to do, the most important thing is download kar lena as early as you can, because a lot of time we kind of deliberately procrastinate कि बाद में कर लेंगे, क्या जल्दी आ तो गया है, अभी डाउनलोड मार के प्रिंट ले लेंगे. Don't do that. बहुत बारी बच्चे लोग एंड तक वेट करते हैं, कभी कभी वो अवेलेबल भी नहीं होता. And on a D day if you want to print it up and all the stuff, you get delayed and then you reach center a little late and then you're not been allowed. And I have seen scenarios like that in the past wherein people, the students were not allowed to even go enter the examination hall. So don't do that, right? Try to kind of take the print today itself. Take couple of prints. अगर एक आध भूल वगैरह गया तो we have a backup. Now let's talk about certain important things. Now first of all, you need to check your admit card and try and understand whatever has been written there is absolutely correct. There is no spelling mistake. There is no a mistake with respect to your details and everything. That's number one. Number two that I want to tell you guys is that it's kind of a disclaimer is that try not to panic, because a lot of people will tell you that अरे तेरा तो slot 1 आएगा, slot 1 तो बहुत सही है, पेपर easy होता है. कोई बोलेगा अरे यार slot 1 में बहुत problem होता है because we are the first one to get the heat and all that. And somebody will say that यार तेरा slot 4 है and इजी होगा. नाउ डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ये चीजें बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है. अगर आपने पढ़ाई करी हो ना तो एनी स्लॉट यू आर मोर कंफर्टेबल विद, राइट. अगर आपने पढ़ाई करी ही नहीं है ना तो अगर आपके हाथ में भी पेपर दिया जाएगा ना लिटरली सीईटी का, तो भी 200 में से 200 क्वेश्चन नहीं बनने वाले. सो द पॉइंट इज दैट लेट्स बी लिटिल बिट more realistic and let's not kind of put ourselves into the frame of मेरा slot 1 है, मेरा slot 2 है यार, मेरा slot 4 है, पता नहीं यार. because slot 1 के बच्चे बहुत बारी they kind of get tense because of which the entire preparation gets spoiled. तो ऐसा कुछ होता नहीं है. if you are prepared very well, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि बॉस मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, now I have to slog my ass, as simple as that. बाकी कुछ भी नहीं. that's number 2. Number 3 is that now your preparation has to be done in the time zone wherein you will be writing your CET. If your slot is in the morning, if your slot is in the afternoon, वो जो 2.5 घंटा जो आपका CET का दिया है, उस 2.5 घंटे में ही आपको आपकी मॉक्स लिखनी है. I'll reiterate for you. उस 2.5 घंटे में ही जो भी आपके एडमिट कार्ड पे टाइम है, उस 2.5 घंटे में ही आपको अपनी मॉक्स लिखनी है. That's number 1. Number 2, अगर मैं बात करूं, अगर आपको मॉक्स भी नहीं देनी है तो आपने कहा कि सर आज मॉक्स देने का मन नहीं है, व्हाट शुड आई डू. वो 2.5 घंटा सोना नहीं है, वो 2.5 घंटा आपको बैठ के आपको पढ़ाई करनी है. बिकॉज नाउ इट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट योर ब्रेन एंड योर बॉडी मस्ट गेट यूज्ड टू दोस 2.5 hours. तो वो 2.5 घंटे में ना आपको भूख लगनी चाहिए ना आपको प्यास लगनी चाहिए. दैट 2.5 घंटा योर ब्रेन शुड गेट यूज्ड टू कि यू नो व्हाट, हाँ ये 2.5 घंटे में मुझे ये काम करना है, आई एम गोना बी डूइंग सम टेक्निकल स्टफ. So get used to it. That's very important. Now try to get your schedule in place. Like if you got an early morning slot, you got to get up a little early in the morning. You need to get into that routine. As simple as that. Now, couple of important things from this is that from today onwards, I want you to get more engaged. Okay? अब 2 चीजें होगी. एक तो एडमिट कार्ड आया तो मोटिवेशन आएगा, या फिर एडमिट कार्ड आया तो कभी कभी बच्चा लोग डीमोटिवेट भी हो जाता है कि यार शिट एडमिट कार्ड भी अभी तो आ गया, मेरी प्रिपरेशन इतनी हुई नहीं है. So ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है guys, you have to buckle up and you have to work little bit extra harder than the other guys. Now let's say if you are somebody who's been really consistent, अगर आपकी पढ़ाई पहले से consistent है, right, then you don't have to worry. The only thing that I want you guys to do is थोड़ा engagement बढ़ा देना अपने पढ़ाई के लिए. So जैसे हम as and when you are moving towards your CET, that anxiety is gonna kill you, that pressure is literally gonna kill you, plus unwanted thoughts in our mind are always going to be there which can kill your productivity and effectivity. तो पहली बात है अपने आप को जितना एंगेज कर सकते हो उतना एंगेज करो. अब एंगेज किस में करना है? एंगेज करना है आपको आपकी पढ़ाई में. सब फालतू चीजों से बाजू में हो जाओ, राइट. गेट योरसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, आई वुड से दैट. ओके, एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. एट व्हेन यू प्रिपेयर, 1-2.5 घंटा आपका एक्टिव मॉक तो होना ही होना है. एवरी 2.5 घंटा वो जो टाइम सीटी का टाइम है उसमें तो आपको पढ़ाई करनी है, वो करना है. पर मैं कहूंगा कि यार ट्राई टू गिव लॉट ऑफ पैसिव मॉक्स. If you ask me, if I were you, now onwards I will try to check or I will try to see so many questions. I'll try my level best यार मैं एक दिन में 200-250 क्वेश्चन देखूं या मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन देखूं. कुछ बच्चों ने पैसिव मॉक वाला फंडा चालू करा था. They are doing 400 questions in a day. उनको पता भी नहीं चल रहा कि मेरे क्वेश्चंस कब बन रहे. They are able to understand the LOD. They are now able to understand which questions to be picked up, which question they should be leaving. All this stuff. The only humble request is that
Get yourself more engaged. Try to do as many questions as you can. Proper schedule बना दो. और एक important चीज़ है कि फालतू न्यूज़ से थोड़ा दूर रहना. There might be a lot of rumors in the market, like CET ऐसा आने वाला है, वैसा आने वाला है. Do not let all these things to kind of disturb you and your preparation. जो अपना परफॉर्मेंस है वो चलने दो. और एक चीज, अगर आपका मॉक में स्कोर ऊपर नीचे आता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. डे पे सब चीजें अलग होती है. डे पे में, as I always say that, day you're going to be performing by default very well. You will be a different student altogether on a day, and that has to be on a good side. तो उसमें आप टेंशन मत लो. Just try to follow these things and respect your time and utilize it very well. अगला 10-12 दिन अगर प्यार से यूटिलाइज करोगे, दिल से मेहनत करोगे, तो आने वाली 20 या 30 साल बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी which you will feel really proud of yourself. So इतना ही मेरा कहना है कि अभी एडमिट कार्ड आ चुका है. It's a warning कि भाई buckle up, put in your best foot ahead and try to slog yourself. So that's what I'm gonna tell you. I'm also gonna do this thing for you guys. So last year I couldn't do it for slot 1 and slot 2, but slot 3 का मैंने analysis दिया था because of my personal reason I couldn't do last year. So slot 3 I got free and slot 3 का मैंने analysis दिया था, which helped people a lot on slot 4 at my 99.99, my 99.97 and 99.95. मेरे 3 बच्चे slot 4 से आए थे. So what I'm going to do is this year I will be actually available for every slot. So हर एक slot के बाद आपको analysis आएगा and then I'll be telling you कि slot 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा क्या करे. Plus I will be telling you slot 1 का बच्चा का mentality या फिर EQ क्या होना चाहिए. So everybody will be taken care of. So if you have not subscribed to my channel, just click the subscribe button and click that bell icon so that you get notified. Because I will be doing this and this is going to be really, really important on the DD for you guys. So guys, I wish you all the very best. Make sure that you really, really work hard. Try to give a lot of mocks, try to see a lot of questions. And trust me guys, I mean this is something I really strongly believe, right? If you're really honest towards your studies and if you really, really work way harder for like next 12 and 13 days, you don't need anybody because he's gonna take care of you. And when he takes care of the things, it has to be best in the world, right? So guys, I wish you all the very best. Do work hard and stay tuned to my channel. Thank you so much.